So my screen is visible to all, right? Yes, sir. Yes, sir. Guys, today we are going to discuss about Python. And that cherry pick I'll discuss towards the last. Future become. Yeah. Okay. Yes. So from the beginning, I would like to discuss about that Python. Today, Python as a scripting language. So it is actually everywhere it is being used nowadays. People are this Python is very popular because of its uh, the code is easy, very popular because of the code is very easy. Like self scripting, the second easy code is like Python. So and Python is used everywhere nowadays. That's why we are going to read the Python. And nowadays the data scientist is also going to uh, especially this particular Python is popular because of this data engineering, data analytics, and data scientist. And it became more popular when the another framework that is called Django comes to picture. So lots of frameworks are there. So like people are sometimes expecting that what is actually framework. Language है framework क्या है फिर देखो language is like it's a C, C++, Java, these are the languages, and this Linux, Python, Linux shell scripting, Python, Bash scripting, Perl scripting, Ruby scripting. These are called the scripting languages. Then what is the framework? Framework is like you can tell it's a plugin kind of thing. Like a language is there, but that language for writing lot of code for achieve a particular goal, you are writing lots of code. If you are adopting one framework, then that framework you need to just import or you need to just write that use framework like this so that this framework is going to give you a lot of feature and there is no need to write lot of code for that. So that is actually framework is giving lot of features so that you will just use the feature instead of writing the whole code. Hmm. Like in the Java, lots of features like Android, like on Spring Boot. So these are the things came. Then because of that only Java became much more popular. But Python's use, shell scripting's use, Java use, the people are using differently. You can't tell that Python is better than Java, yeah, Java is better than Python, yeah, shell scripting is better than Python. You can't tell. If it is better than, then everybody should use, right? Why still people are using Java? Java has some better functionality than Python in some specific area. Like this, Python is having some basic that has some main good feature with respect to the analytics, like data analytics, data scientist, data engineering, like some web portal creation. But again, if you are just focusing the web portal, like web application, then Java is still better than Python because for the web related things, Java is giving more flexibility to the developers to create the front end, then connectivity, everything. Then, if that is Java is giving functionality wise better in the uh, creation of web application, then obviously people should more inclined to the Java. So then why Python? Why the people will choose Python? Just one, just one day. There is a call. Hello, who is this?
So guys, yes. So here, uh, then if you will tell about the web application development, obviously Java is better than Python. Django is not that much supportive because Java, the Python not that much supportive. Java is already since last long days it is used as a uh, this web application programming. Okay. But if you are telling about Python, then as I told, it is very easy to develop like SDK programming, like any uh, analysis purpose, and like any like graph creation. Like suppose you want to create a pie chart, you want to create a bar chart. Then for that it is good because with respect to data, with respect to data, Python given lot of libraries like NumPy, Pandas, then Matplotlib, Seaborn. So lots of libraries it given. Because of that, this data analysis, the data analytic is having getting more flexibility to work with the data uh, using the Python. Okay, so what we are going to discuss, that's why Python is more popular, and how the Python is related to DevOps. Guys, the language that one of the configuration management we are using, right? So that configuration management is basically the configuration management is basically it is for the uh, 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 it is Ansible, right? You are using Ansible. So to write the Ansible code, you are using which code, guys? To write the Ansible code, what you are using? We have already discussed that Ansible, right? Yes, What we are using? YAML language. Y, YAML language. YAML language, yet another Yes. markup language. But to run that YML language or to run the Ansible, we must have Python in the background. Why? Now, Ansible is written or Ansible's modules are written using the Python. That's why we can tell Python is the native language. Python is the native language of Ansible. Understood? And some of the software development toolkit, SDL kit, there are SDK, some Boto 3 to uh, automate something like some like infrastructure. So Python is better. And as although we are not going to discuss lot of things about the Pythons, like how the Boto 3 application is going to run everything, but yes, we are going to discuss the Python basics. Okay, from the beginning it was not in your course. In the third or fourth batch onwards, we have added this thing. Sometimes the interviewer is asking about the Python. What is actually Python? How the Python is beneficial, or what are the things like list, tuple? Because in the AWS in the Terraform time also, you are going to use lot of data structures of the data structures which are as like as the Python data structure. I will discuss all the things. What is data structure? What is everything? So, like suppose we have 3 to 4 number of data, then they will be represented as either JSON or either in the form of set or in the form of any list or tuple like this. So that thing we are going to cover details. So we are going to cover like data types, variables, and then loops, then module functions. Okay, uh, these are the space things that we are going to use, and a little bit about the oops concept. So which is going to help you to read the code when you are going to join in any of the company.
So sometimes you need to dig the code which is written in the some XYZ language. Like suppose Docker compose file you are going to read. That Docker compose file is calling one Python script. Then that Python script is doing some XYZ work. Then you need to read that. At least you should be able to read the Python code. That's the reason we have introduced a 10 to 15 classes of 10 to 12 classes of Python. Okay, understood what which portion Hello, we sir. Hello, yes sir. yes please. Sir, Yeah, go is ahead. there like oops concept is there in Python scripting? Yes, like Java, there is a oops concept also there in the Python. Today the number is good actually. I'm looking it's good. 19 people joined. Yeah, oops concept is there. Class object concepts are there. Just give me 1 minute. Okay, so I am having a class chalche. Hmm. Class chalche. Just 1 minute. So guys, you just check it in your like in your Ubuntu whether that Python is there or not. Okay, so in my with me there is a Mac system. So in the Mac terminal already the Python is there. In the Mac already the Python is coming in the so if you are choosing the Ubuntu as your operating system through the this AWS, then you are going to get that Python by default also. If it's not there, then you can just install like apt get update Python python 3 like this you can do or sorry first apt get update then semicolon apt get install Python 3 so that your Python 3 will be installed in your system. Okay, so then if you will check which Python version is with you, so Python -1 version. So it is going to tell you that the Python 3.8.2 is there. So to enter into the Python terminal, like now I am in the Linux terminal, right? Now I am in Linux terminal. Here the Linux commands are working, right? Right. So you will get that Python terminal, then only you can able to work. Python 3 you will enter so that you are going to get the Python terminal. So here you are going to use the Python commands only. Here ls command you can't work. You can because ls is a Linux command. There only Python related commands are there. So as I told, we are going to see the command like different data types, different data, so how it is easy to easy than the other languages. So we are going to discuss that one by one. So the program that we were using, the program, suppose I want to write one hello world program. So how we will write that hello world program in C language, in Java language, in Python language. Okay. So let me go out of this terminal. Let me create one project like cd create one file Java file. So vi. So if you want to write a hello world program, hello world dot Java, you have to write this way. Then here you need to write like a class HELLOWORLD. Okay, only best then public
static void main. Okay, so you write the function like this, then system dot out dot print ln, inside that double quote hello world, semicolon, then curly brace, then curly brace. So this is a Java program. Same program. If you want to write in the C, then simply like this, you will mention that include stdio.h, then void main, then this, then simply printf percentile s, comma, double quote hello world. Then semicolon, then this. So this is in C, but in Python, we'll just write print hello world. So guys, just tell which is easier to write this program, to hello world program. Python. Python. Obviously Python, right? So this is one of the example. Suppose I will write another example. I want to add two numbers. Let's say a value will be stored in A. So this program I am modifying. Add two numbers. Here you have to write like int a comma b comma c semicolon, a equal to let's say 20, b equal to 30, semicolon is necessary, c equal to a plus b, semicolon. So here you will write something. Suppose I want to display C, so println C, result. Okay. So inside this also 1, 2, 3, 4. These 4 lines will be there. In the C program also the same thing. Then that printf यहाँ पे percentile D. Then here you write some C. Okay. But inside in Python, what you need to simply A equal to 20, B equal to 30, C equal to A plus B. Here just C. So anyway, you are able to see the less code in the Python. This is in Python. Okay. And this is in C language. This is in Java. So coding is very less in Python. What you are getting the difference between this at least C and Python? Here you are declaring that int ABC, but here there is no need of declaration. So either once you have declared that a equal to 20, sorry, int a, only that a can be used for storing that integers, because you have declared that a as integer. And without declaration, that you cannot assign any value, that 20 you cannot assign into a. So here you have to put that value into a. Sorry, you have to declare that a or b or c before using that. So it's called forward declaration. But here a equal 20, then after some time if you are changing like a equal to 30.5, then c equal to a plus b, then it will take that 30.5. So
Before that it was 20. After that, after some time, if you are making a change, then it is actually changeable. Getting me? Because there is no declaration here, so there is no fixed data type. So you can change the value of that particular variable so that any data can be accepted by the variable. So we'll discuss that during the examples, then you can understand. So if this is true, this Java code is very high number of code you are writing. Then C code is also like Java code, you are writing lot of codes, but in Python, you are writing very less number of codes. This is one of the best feature of the Python. And we will see gradually everything. Okay. So I will write one program like VI, like hello world. Okay. Hello dot py. So to write any Python script, either you can write a script or else you can use the IDE. So Python 3, we are typing, it is taking you to the Python terminal. This is one way you can just write. So simply print within a bracket, hello world, semicolon is not mandatory, but if you are giving a script, so it is printing this hello world. If you are doing an exit command, exit semicolon, it is coming out of that Python code block, this is Python terminal. Then you can write another. So the same way, if you want to print that hello world using the Python program, and write in the VI mode, VI like hello dot py. So always give a Python extension dot py. Then write the program simply print in the bracket double quote hello world. Then semicolon. If you are running this, simply thon3 Python 3 the interpreter, then hello world. Hello. It is also printing the same. Getting me? So to run this Python, this hello.py, you need to give that command Python 3. Python 3 is going to use for running that py program. Clear? So just you have written a single line. So there is no need of writing any main XYZ, right? It is easy, right? Yes or no? Yes, sir. Okay, just give me 1 minute. I'm going to your course content. So let's write one program. Let's write one program or write in the terminal. Okay. So as we discussed in the time of self scripting, whatever things whatever things we are writing in the command prompt, the same thing you can write in a file that will be called as shell script, right? Yes or no? हम देखो अभी क्या करता था मैंने एग्जिट करता clear. Suppose here I am putting a cal command. It is giving me this thing, right? And from this cal, suppose I want to take this much data and I want to put this thing into a variable. तो क्या करेंगे इधर कि cal then pipe then first line, right? Head HEAD -1 करेंगे तो हो जाएगा. And I want to keep this thing in a variable. What I will do? I will declare one variable like ABCD equal to
I can give a backtick in and out of this particular command, before and after of the command. Then ABCD is going to store the data, right? Echo $ABCD. Yes or no? Hello. Yes, sir. So these Yes, three sir. lines, these two lines I have written inside the command prompt. It is working. If I'll keep the same thing in a file, let's say vi, let's say cal.sh, I will echo $ABCD. Then I can run this. So this is a shell script, right? ls minus ltr, this is a shell script, cal.sh. So to run that sh cal.sh. It is doing the same thing that I was doing in the command prompt. So all the scripting languages are like this. If you are, whatever things you are writing, you are able to write and execute in the command prompt. The same thing if you are writing in a file and executing that, then that is called a shell script in the Linux. Like this, in the Python also, whatever things you will able to execute in the Python command prompt, the same thing if you are writing in a .py file, that is also going to be executed. So let me go to the Python command prompt, Python 3. Then here I enter. Then I am declaring a. Suppose I want to add two numbers, a equal to 20, b equal to 30, c equal to a plus b. Then print inside the bracket. I write like the sum of, the sum of $a plus, right? क्या करेंगे सर, कमा $a लिखेंगे, इधर क्या है, सिंपली a कमा डबल कोट and comma b comma is comma a plus b. लिखते अभी आया क्या, आया है नहीं? द सम, सर ये कैसे लिखा हमको समझ में नहीं आ रहा. देखिए, जिसको हम लोग डायरेक्टली डबल कोट में रखे वो डायरेक्ट प्रिंट हुआ, राइट? यस सर, नो? और ए क्या है, एक वेरिएबल है. ए को अगर डबल कोट में रखेंगे क्या लिखेगा, इधर ए दिखेगा ना. तो बट मैं चाहता हूँ ए का वैल्यू. सो इन लिनक्स वी आर गिविंग $a, बट इन पाइथन आई कैन गिव द डायरेक्टली ए. ओके, सो इंस्टेड दिस कॉमा मिला, उसके बाद ए मतलब दिस 20, एंड को डबल कोट में रखा इसलिए एंड डायरेक्ट प्रिंट हुआ. देन कॉमा दिया तो बी मतलब बी देखो कोई कोट में नहीं है इसलिए बी का वैल्यू देगा. देन ए प्लस बी लिखा तो ए प्लस बी आएगा. अंडरस्टूड? Okay, Yes, you are sir. clear, right? Yes. So whatever things we have written here, the same thing if you are writing in a script file, then this is called a Python script. So just what I like vi like add.py. If I am writing add.py, so a equal to 20 semicolon, b equal to 30 semicolon, c equal to a plus b semicolon, then print inside a pair of this the sum of comma a comma and comma b comma is comma a plus b semicolon. Let me run this script. क्या करेंगे? So because of it is a Python script, शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए sh लगा रहा है. पाइथन को रन करने के लिए पाइथन 3 देन cal.sh. ओके, कुछ तो सॉरी काल नहीं, पाइथन 3 दैट
हम लोग क्या लिखे add, right? add.py. So it is giving me the output. So it is very easy language. Okay, it is very easy language. You are just writing the things, and it is not that much difficult like shell scripting. Even in the shell scripting, you are writing like $a $B, then some syntactical thing, then expr, then backtick, right? Lot of things, right? Yes or no? Yes, sir. But Yes, in the sir. Python, what you written? You have just written this, but nothing. A plus B, बस. कोई backtick जरूरत नहीं. So it is again easier than shell scripting. Okay. So this is a shell scripting language. Shell scripting. तो इसको comment करते हैं. Python का भी comment. Okay. Python का भी comment हाथ से शुरू होता है. ठीक है. So anyway, we have. Let me connect to the connect to my one of the other thing, like let me connect to the Python 3 ID only Python 3. So sometimes people are asking sir like screen clear screen करते हैं ना in Linux में, इसमें कैसे करें? Control L, okay? By pressing the Control L, then it is going to clean your screen. Okay, Control L. So your screen is cleared. Okay, now what are the different functionality of the Python? Okay, क्या है functionality, क्या है हम लोग feature क्या है? जैसे बोला कि it is used for different purposes. That's the reason people are using for developing desktop applications. Okay, for developing web applications. So desktop application, web application, scientific programming. Okay, so there are a lot of purposes that people are networking programming. Okay, then the developing some games, data analytics applications, machine learning, like, okay. So this particular Python is used as a machine learning, deep learning, सुना होगा about sir, right? Then games, small games बनाने के लिए इसको लोग यूज करते हैं. So there are IoT पे भी बहुत यूज होता है, IoT पे. So these are very use cases of the Python. So that's the reason a lot of people are using the Pythons. So if you have any question related to this, just tell me, because हम लोग gradually जाएंगे धीरे धीरे. लोग को क्या करते हैं कि लोग कोई बात नहीं करते. That's the reason. कभी कभी बोरिंग लगता है. तो लास्ट गेट ऑफ क्लास पे भी लोग कोई भी कुछ ज्यादा पूछे नहीं और क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे. देखो ऑनलाइन मेथड इज वेरी डेंजरस. ओके, if you guys are not interactive, I know that people are getting jobs also. We have around 30% people got job, as Rajini sir has told me, 30 to 40% in this crisis time also. But if you are not interactive, then it is not good, right? So today at least I am getting some interaction from you. But you guys should ask me if any question till now, if you have. अच्छा, इससे पहले. I have a question, sir. Yes, please, with this. Sir, in Python, we don't need to execute like a class. We do not declare like a class. Yeah, if you are just preparing the scripting concept, there is no need of a class. Just here we are just giving
ABCD, right? A equal 20. So we are just doing an addition. When we need class, can anybody tell me if anybody is from the OOPS concept except this person? Who was this? Except Akshay, right? Who was asking? Manoj. Yes, Manoj in there. So Manoj, आपको you know Java, right? Little bit और अच्छे से जानते हैं. Java आपको कितना पता है? Yes, sir, a little So bit, sir. yes. So why we need this particular OOPS concept? बताइए. देखो कब हम लोग OOPS करते हैं? या OOPS का मेन कंसेप्ट कहाँ से आया? Mainly it came from an object. So when we are Yes. telling one object like a man, let's say Nihar is a man. Let's say Akshay is a man. Yes, sir. Ramesh is a man. Yes. So this is a relationship. Ramesh is a man. So let's say I'm going to do a picture on that. So it's a good question that you have asked. So हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, नो प्रॉब्लम. तो सपोज this is Ramesh, this is me, this is Akshay. Okay. So somebody, let's say I can tell, अगर ये निहार सर है, ये अक्षय है, let's say, और ये मनोज. So I can tell Nihar is a man, Akshay is a man, Manoj is a man. तो एक मैन के लिए क्यों उसको मैन बोलते हैं ना? These are the features he has. Like he has a leg, two legs. He has two forelimbs. उसको hind limbs and forelimbs बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं hand बोलते हैं. Okay, hands. Then one head towards up, right? Up करके रखा है, तो उसके लिए he can talk, he can listen and smell, he can react. So lots of these properties जिसके पास है, the same thing is also present with this person Akshay and Manoj. That's the reason Nihar is a man, Akshay is a man. So ये सारे को अगर हम लोग जोड़ेंगे, Nihar has this capacity, Manoj has this capacity, and Akshay has this capacity. Then only we can tell it's a man. तो ये जो चीजों जिसके पास है, it is a class of things. तो दिस क्लास ऑफ थिंग्स को लेके जो भी बंदे बने हैं, इसको वन ऑन ऑब्जेक्ट बोलेंगे. सो लाइक देन हमको क्लास और ऑब्जेक्ट कंसेप्ट चाहिए. आई नो although that AWS, sorry, this Python is supporting class object concept, but wherever needed, we can use that. If it not needed, you can just use simple. But I will show you lot of things like, but here everything is. Are you able to see my screen, guys? जो picture बना रहा हूँ? No, right? No, sir. No, sir. My God. Just 1 minute. Let me share my 1 minute. New share. Right, drawing. Now you are able to see. Yes, Yes, sir. sir. So Nihar having these things, Akshay has having these things, and Manoj has these things. Then only Nihar, Akshay, and Manoj are called as a man.
तो ये इसको बोलते हैं, ये चीज को जो पकड़ेगा उसको बोलेंगे क्लास। फिर ये क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनेगा तब जाके। बट हमारा जो प्रोग्राम है, ये हम लोग को ये दो दो तीन काम, A = 20, B = 30, C = A+B करना है। गाइस स्टिल ये ए और बी और सी है ना, ये जो 20 को स्टोर किया, 20 इज ए integer variable, integer value which is stored in the integer variable, तो int is a class। गेटिंग मी? वो सब हम लोग पढ़ेंगे, नो वरीज। ओके, सो doing one thing, going to my terminal, up to this everybody Sir, clear? Manoj, Manoj, do you have? Yes, please go ahead. sir, for loops concept is there in Yes, Python. yes, for loop, while loop, variable, everything is there. Okay, no worries, I will discuss everything. Okay. Okay, sir. सो नहीं, एक्सेप्ट दिस मीन्स और कुछ है क्या, जैसे कि हाँ, मैं खाली उतना बोल रहा हूँ, जो चीज हम लोग सेल्फ किटिंग में पढ़े हैं सेम चीज सब कुछ इधर है। सेल्फ किटिंग जो चीज हम लोग कर चुके हैं ना, वो सब चीज जैसे कि लूप से वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, सब इधर है। वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो फर्स्ट कि इनका जो फीचर्स थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हुआ। आई नो दैट पाइथन इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन एवरीवेयर नाउडेज, बट व्हाई इट इज सो पॉपुलर? द रीजन इज, yeah, the reason is like it is very simple to easy and learn. As I told, it is very simple to write the code and learn the code, and it is open source. Okay, and people are telling it as a high level language also. Why high level? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज एंड इजी जो टर्म है, ये दोनों टाइटली कपल्ड वर्ड्स है। किसको हाई लेवल बोलते हैं एंड किसको लो लेवल बोलते हैं? कि द कोड व्हिच इज नॉट दैट मच इजी, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज कोड। प्रीवियसली असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड वाज देयर, उससे पहले बाइनरी लैंग्वेज कोड वाज देयर। now you are just reading like English type, the print, print. Print is a English like language, right? English like code, right? That's why Python is that terminal गया, just 1 minute, terminal पर I am not able to access, एक बार और टर्मिनल खोलना पड़ेगा। Let me open the terminal again, okay? Is it visible guys now? Yes, sir. Yeah. So high level programming language किसको बोलते हैं? कि the language which is like C language is also called as high level language, C++, Java, C के बाद जितने भी लैंग्वेज आए सबको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों ना? इट इज इजी टू राइट स्पेशली, and hence it is programming that is program friendly, right? Like people can write that program in easy way. So that program that I have shown you, right, r.py. So here the things that you are writing, a print in the bracket, so these things are readable easily, but यही चीज अगर होता था इधर असेंबली लेवल लैंग्वेज में कैसे लिखते थे बताता हूँ। ऐसा add, पहले बोलते थे कि सेट सेट ए आज ऐसे 20, सेट बी आज 30, देन आर ए बी, ऐसा लिखते थे।
तो ये जो कोड था इसको असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड रहता था। उसके पहले क्या था ना, ये सेट के लिए सपोज ऐसा लिखते थे कुछ, ऐसे कुछ लिखते थे, देन 20 के लिए कुछ ऐसा सोचो कि कुछ ऐसा। तो हुई चीज इजी, ये इजी लग रहा है या ये इजी लग रहा है या ये इजी लग रहा है। ये आर के लिए खाली मत सोचो, अभी एडिशन के लिए आर तुमको पता है, बट अदर चीज के लिए क्या करोगे। तो ये थोड़ा इजी लग रहा है अभी के लिए, नो प्रॉब्लम, बट इट इज एक्चुअली लाइक ए इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, बट इट इज नॉट रीडेबल। ओके, इसको सडनली समझ में नहीं आएगा, राइट। एक लाइन के लिए एक सेट ए आज 20 के लिए इतना कोड लिखा है। दिस वाज बाइनरी टाइप ऑफ कोड, दिस वाज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड ए हाई लेवल लैंग्वेज। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो इसलिए इसको हाई Yes, लेवल sir. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, गाइस यही प्रोग्राम को, मैं जो प्रोग्राम को लिखा सेम प्रोग्राम को अगर आप लेके विंडोज पे रन करोगे, that is also going to run. The program that I am writing in a using this Linux environment, same script, same Python script. If you are writing in a Windows environment or in the Windows file system, if you are creating the same code, exactly same code, then there is no need of do any code changes. This is going to run. That is called platform independent. Okay. So why it is platform independent? There is a PVM, Python virtual machine is there, which is running under that. That is going to take care of the operating system. Then whatever code you are going to run, that is not code dependent. So whatever code you will write, that these codes are going to be understand by the underlying operating system. Because the ये जो independentness कौन करता है ना, उसके एक PVM है, that is a Python virtual machine, which is going to make your code independent. Like there is a JVM in the Java virtual machine. Java codes are also in that OS independent. Like Java, Python is also OS independent or platform independent, you can tell. Portability. So देखो ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टर्म जो है ना, पोर्टेबिलिटी के साथ भी समान। पोर्टेबिलिटी बोले तो पोर्टेबल, इजीली ट्रांसफरेबल। सो एक कोड का साइज कितना होगा, 10K, 11K, 20K। 20K को आप आराम से ले सकते हैं एक जगह में, दैट मीन्स एक जगह में लिख के उसको अनदर जगह में चला सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी जहाँ पे होता है, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि लैपटॉप इज ए पोर्टेबल device, desktop is not a portable device. Why laptop is a portable device? Now I have purchased that laptop from a shop, I am using it, and if required then I am carrying this particular laptop and using the same laptop in another office also, right? Then I can tell it's a portable device. So जो पोर्टेबल होता है उसको बोलते हैं कि इजीली ट्रांसफरेबल। सो पाइथन प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल, दैट इज वी कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। लाइक सिंगल प्लेटफॉर्म अगर आपके एक प्लेटफॉर्म में बनाते हैं, लाइक इन लिनक्स से प्लेटफॉर्म में बनाया, सोलारिस प्लेटफॉर्म में चलाओगे चलेगा। सो कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ इज इट पॉसिबल, हु इज देयर, कौन आंसर देगा? हु इज देयर टू टेक केयर ऑफ दिस पाइथन। देखिए मैं पाइथन कोड तो विंडोज में लिखा और लिनक्स पे कैसे चलेगा? there is a PVM, okay, Python virtual machine. machine। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है कि आपका सोर्स कोड के पास ओएस के पास पहुंचा नहीं देता है। सो पीवीएम क्या करता है कि आपका सोर्स कोड को पढ़ता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करता है। सो ये पीवीएम का काम है ओएस के साथ कैसे डील करेगा। तो ये अकॉर्डिंगली जैसे कि वो चेक करेगा कि उधर व्हाट इज द कोड, व्हाट इज दैट बेस, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कोड को विंडोज जैसा, मतलब इट विल बी ट्रांसलेटर काइंड ऑफ थिंग, विंडोज जैसे मांगता है ये कोड को ऐसे कन्वर्ट करके पाइथन क्या करता है, दे देता है विंडोज को। अगर लिनक्स को चाहे फिर उसका काम है लिनक्स को पीवीएम करेगा, पीवीएम उसको कन्वर्ट करेगा
बट यूजर को क्या होता है, यूजर को टेंशन नहीं, यूजर जैसे विंडोज के लिए लिखेगा कोड सेम, नहीं तो क्या होगा ना, विंडोज के लिए अलग फॉर्मेट सीखेगा, लाइनक्स के लिए अलग फॉर्मेट सीखेगा, सोलारिस के लिए अलग फॉर्मेट सीखेगा, मैक के लिए अलग फॉर्मेट सीखेगा, तो यूजर विल टेक टेंशन। नाउ हु इज गोइंग टू टेक टेंशन? पीवीएम इज गोइंग टू टेक टेंशन। पीवीएम क्या करेगा ना, आप जैसे जिस लैंग्वेज, मतलब आपका काम है पाइथन का एक ही टाइप का कोड लिखने का। इफ it is going to be run in the Windows, then this particular Python, the PVM is going to convert this code as per the Windows, then it will submit that code to Windows. Then like this, अगर लिनक्स में लिखे तो आपका काम नहीं लिनक्स में कैसे कोड, आपका काम यही ऐसा ही कोड लिखने का जैसे कोड आप विंडोज में लिखते हैं। बट पीवीएम क्या करेगा ना, लिनक्स को लेके, लिनक्स को विंडोज को तो वो उनके हिसाब से देगा जैसे कि लिनक्स को चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं, अब मुझे चाहिए कन्नड़ लैंग्वेज, मुझे आता है, मुझे लेट्स से बंगाली लैंग्वेज आता है, महाराष्ट्र लैंग्वेज आता है। कोई उड़ीसा का बंदा एक कोड दे दिया और मैं उड़ीसा का हूँ, तो मैंने ये तीन ही लोगों को, मतलब कन्नड़ में कोई चाहता है तो क्या लिखा है दिखाने के लिए, मैं उड़िया को पढ़ूंगा, मेरे को समझ में आ गया, मैं उसको कन्नड़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कन्नड़ियन को सिखाऊंगा, जो महाराष्ट्रियन लोग को महाराष्ट्र लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूंगा, बट कोड इज सेम, राइट? दिस थिंग यू अंडरस्टूड व्हाट इज द पीवीएम इज डूइंग? Yes. Because of this PVM, this is you can tell platform independent and portability possible. Okay, then डायनामिक टाइप्ड। डायनामिक टाइप्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, आपको पाइथन 3, let's say one variable, let's say my age, or any other thing, like you can tell my money equal to, or account balance equal to, AC balance, ACBAL, AC balance equal to 20,000. So now I stored this 20,000 in AC balance. I want to display that. क्या करेंगे? Print, right? Print AC balance. Now it is going to be displayed. And I want to see the type of this AC balance. There is a function called type. Inside that ACBAL, if you type semicolon, it is going to show it is int type. It is integer type. But the same variable AC balance, if I am storing another value like 50.5 or 500.78, 500 रुपया 78 पैसा, तो देखिए अभी उसका प्रिंट करेंगे, वो भी वैल्यू आ रहा है। अगेन इफ यू गेट अ टाइप, इट इज टेलिंग दैट इट इज अ फ्लोटिंग टाइप। दिख रहा है क्या? फ्लोट। So here it told that it is integer type. The same variable I have used, but this time I have stored one float value, one decimal value. Here it was a whole number or integer number. That's why it was telling it's an integer class. Now I stored a float number, or it is a decimal number. Now it is telling it's a float type. So dynamical type, there is no need of declaring that variable like int cbal like this, like C. If you are declaring like this, like C, फर्स्ट है कि यहाँ पे डिक्लेयर जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग सी में डिक्लेयर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, ऐसी बैलेंस में आपको इंटीजर ही डालेंगे, उसमें अगर फ्लोट नंबर डाल दिया एरर मारेगा। क्लियर? Yes, sir. Okay. Next, that is another feature called the procedural and object oriented. Object oriented मैंने बताऊंगा जो टाइम में उप्स बताऊंगा। ओके, तो कैसे करते हैं कि एक क्लास लेते हैं, फिर वो क्लास का डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट, उसके बाद वो क्लास जिसको ऑब्जेक्ट, जितना क्लास से ऑब्जेक्ट बनेगा। इट इज लाइक योर टेबल। इफ यू हैव सीन employee have some criteria, right? Employee should have some name, should have some
देखो मैं आपको भी बताता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगा. That will be good if I am telling. Let's say there is a employee, EMP. So ये एम्प्लॉय को हम लोग आज एक क्लास कर पकड़ेंगे, CLAS. क्या होगा ना, ये एम्प्लॉय मस्ट हैव, क्या क्या होगा आप बता दो ना. एम्प्लॉय मस्ट हैव ए नेम, it should have a employee ID, it should have a joining date, it should have a department, it should have a salary. Okay, it should have a manager name also. इनका कोई manager name. So these are the property of the employee class. But मैं अभी बोलूंगा कि शीतल, शीतल, if शीतल is a employee, then शीतल has a name, क्या है ना, शीतल. Then इसका एक आईडी रहेगा, लेट्स से 1 2 3 4. जॉइनिंग डेट रहेगा, लेट्स से 10 12. The screen 5. is not visible. नॉट विजिबल. ओके ओके. Actually, I am using somebody else's laptop, having some problem in my laptop. That's the reason I could not able to share my screen, the whole screen as a restriction. Then a department ID, right? Department ID, let's say HR or department ID, department HR, right? HR department. Salary, let's say 20,000-30,000. Okay? Then manager name, let's say Madhu. तो शीतल, अभी देखो, अभी शीतल गया, अभी राम के लिए क्या करेंगे. राम के लिए देखो, राम हैज ए नेम लाइक रामचंदानी. देन उसका आईडी लेट्स से 1345. देन उसका लेट्स से वैल्यू लाइक 7/9/2022. ही जे लेट्स से सेल्स में, सेल्स डिपार्टमेंट है. लेट्स से उसका सैलरी 20,000. लेट्स से उसका मैनेजर भी मधु, और जो भी है. गाइस अभी ये 3 सेट ऑफ डेटा से आपको क्या मिल रहा है, क्या रिलेशनशिप है, कोई बोलेगा क्या इधर. देखो ये एम्प्लॉय के नीचे ये सबका हेडिंग है, राइट. एम्प्लॉय Yes, नेम sir. शीतल. इफ शीतल इज ए एम्प्लॉय, देन शीतल एम्प्लॉय का नेम शीतल, शीतल एम्प्लॉय का आईडी दिस, शीतल का जॉइन डेट दिस, शीतल का डिपार्टमेंट दिस. So then, if Ram is an employee, Ram can be same in similar information, similar, not same, similar. So now this Ram, I can tell if employee is the class, then Sital is the object and Ram is the object. So मैंने ऐसा, ये जो शीतल is a employee, Ram is an employee, शीतल is an employee मैंने बोल सकता हूँ. तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जो रिलेशनशिप होता है, इजी रिलेशनशिप. एंड दिस, ये जो ऑब्जेक्ट के साथ इनका क्या क्या रिश्ता है ना, हाजे रिलेशनशिप. शीतल हाजे नेम, राम हाजे आईडी, शीतल हाजे जॉइनिंग डेट, राम हाजे सैलरी. तो ये सारी चीज के लिए हमको क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट चाहिए. फर्स्ट वी नीड टू डिक्लेयर वन क्लास. And using that class, we will create the number of objects. तो आप दिखे होंगे, ये तो हो गया क्लास ऑब्जेक्ट. इसको कहाँ पे दिखे, इसको अगर ठीक से मेंटेन करेंगे, इट कैन बी क्रिएटेड एज ए टेबल आल्सो, राइट. एम्प्लॉय टेबल का हेडिंग रहेगा नेम, ऐसा रहेगा ना, देखो ऐसा रहेगा. एम्प्लॉय टेबल का क्या रहेगा, नेम रहेगा, उसके बाद आईडी रहेगा, उसके बाद जॉइनिंग डेट रहेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट रहेगा, राइट. उसके बाद सैलरी रहेगा, उसके बाद मैनेजर रहेगा, मैनेजर नेम. देन
एक एक like शीतल पुष्टि, लेट्स से PRUSTY, शीतल पुष्टि, लाइक ये आईडी, यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4, देन ज्वाइनिंग डेट कुछ तो दे देंगे, राइट? समझा गया? ऐसा ऐसा ही होता है ना, ज्वाइनिंग डेट कुछ तो देंगे, देन डिपार्टमेंट आईडी कुछ ऐसा लिखेंगे, राइट? कुछ लिखेंगे, सैलरी लेट्स से 20 30,000, राइट? देन इसका है कोई मधु होगा। तो ये जैसे लिखा सेम वही हम लोग किसका लिखेंगे, किसका, राम का भी लिखेंगे। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो क्लास ऑब्जेक्ट बोलते हैं इधर क्या लिख दिया, इट इज ए एम्प्लॉय टेबल का हेडर एंड एम्प्लॉय टेबल का डेटा बोल सकते, राइट? तो इट इज टेबल हेडर एंड टेबल डेटा, राइट और नॉट? तो टेबल डेटा टेबल हेडर के लिए, सो दीज द टेबल हेडर इज नथिंग बट द, इसको बोलते हैं कि दीज आर एंटिटी प्रॉपर्टीज एंड दीज आर वन वन एंटिटीज इन द डेटाबेस कंसेप्ट। इसको बोलेंगे एंटिटी, इसको बोलेंगे द हेडिंग ऑफ द, और इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, ओके? ये सब चीज रहता है। तो ये वही डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल पे हम लोग को जो फ्रंट एंड में जो डेटा लेंगे एज ए क्लास ऑब्जेक्ट उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे डेटाबेस को, तो डेटाबेस में डेटा जाके ऐसा स्टोर होगा। दैट्स द रीजन Python is very popular. Python supports that. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I'm going to that it is a procedure oriented language. We can write some functions, some procedures like cell scripting हम लोग लिखे थे ना, वो फंक्शन वगैरह यहाँ पे भी फंक्शन वगैरह लिख सकते हैं। Then it is a interpreted language. Guys, why it is interpreted language? Let me exit from this screen. That language that I have written a vir.py. So let's say this is the thing. I'm deleting all the things here. Guys, ये कोई कंपाइल नहीं होता। आप अगर छोटा सा डायरेक्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे लेट्स से 40 किया और डायरेक्टली रन किया, सो डायरेक्टली python 3 add.py। तो कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक सी, सॉरी लाइक पाइथन, सेल स्क्रिप्टिंग, पर्ल स्क्रिप्टिंग, they are all called as a interpreted language instead of compiler language. Compile language इसमें डिफरेंस क्या है? If it is a Java code, then आपको क्या करना पड़ता था ना, पहले आपको सोर्स कोड, ये जो लिखा हम लोग ऊपर उसको बोलते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड बोलेंगे। सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे, सोर्स कोड कंपाइल करेंगे और जो बनेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद उसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से अभी यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बोलेंगे, दिस इज आवर add.py कोड, add.py कोड। सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड, और हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। देन ऑब्जेक्ट कोड में उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट जब करते तो हमारा रिजल्ट निकलता है। बट द सेम थिंग, सर ये हो गया आपका सी कोड, एबीसी डॉट सी और एबीसी डॉट जावा, ये कोड को कंपाइल करना पड़ता है। बट व्हेयर एज इफ इट इज ए पाइथन कोड और डॉट पी फाइल, लेट्स से abc.py, then simply we are going to run that। आप एग्जीक्यूट कर दो, यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट आएगा। सो कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं है इधर, जहाँ पे कंपाइलेशन नहीं होता है उसको इंटरप्रेटर लैंग्वेज बोलते हैं।
Clear? Yes, sir. Yes, sir. So then extensible. Extensible का मतलब क्या है कि you can integrate this Python code in all other languages also. For that, it will provide you a lot of libraries. एक बोलते हैं सी पाइथन, जे पाइथन, जावा बेस्ड एप्लीकेशन के साथ आप पाइथन कोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सी कोड के साथ सी पाइथन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल। ओके, then there is extensible and embedded. It is one kind, same kind of thing. Embedded means you can integrate. Extensible मतलब you can write in any. There are a lot of language bases. Python का बहुत सारी वर्जन रहता है, like J Python, C Python. So these are called extensible. But embedded क्या है कि एक Python कोड को आप J Python के साथ लगा सकते हैं, एक Python कोड को हम C Python के साथ लगा सकते हैं, like this. Okay. Because of it is containing lots of libraries. That's the reason it is very popular also. It is fit to everywhere. Okay. So there are some rules actually. There are some rules in Python. But before getting that rules, we should learn something, some variable and some literal concept at least. Okay. So चलिए अभी कुछ कर लेते हैं उसके लिए. Guys, ये जो a इक्वल टू 20 लिखा, लेट्स से अभी और एक कुछ बोलता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट वन ईमेल आईडी. ओके, तो लेट्स से एक नेम आएगा, नेम इक्वल लेट्स से निहार और लेट्स से संजय, SANJY संजय, एंड लेट्स से सरनेम और उसको लास्ट नेम एल नेम इक्वल टू पाटिल, एफ नेम इसको बोलते हैं, एफ नेम इक्वल टू संजय, एल नेम इक्वल टू पाटिल, and I want to write like print संजय पाटिल. क्या लिखेंगे? सिंपली एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा ई बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. देन मैं चाहता हूं कि सेम संजय पाटिल को यूज करने के लिए एक ईमेल आईडी करने के लिए, सो क्या करें? प्रिंट एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा कॉमा डबल कोट में लिखता हूं ईमेल आईडी इज कॉमा, यहां पे लिखता हूं एफ नेम डबल कोट के अंदर @ और यस एक काम करेंगे इधर ईमेल करें EMAIL ईमेल इक्वल टू एफ नेम डबल कोट के अंदर @ ऐसा, देन एल नेम. ओके, तो ये क्या करेगा ना, एफ नेम को लेगा संजय, एल नेम को लेगा पाटिल, देन ये डबल कोट के अंदर @ को इसको क्या करेगा? अपेंड करेगा एफ नेम के बाद, एल नेम के बाद, और यहाँ पे डॉट लगा देते हैं. पहले ये डॉट रहेगा, इधर @ नहीं रहेगा, इधर @gmail.com. तो मैंने क्या किया? एफ नेम को ऐसा ओपन रखा, एल नेम डबल कोट के डॉट लिखा, एल नेम को ओपन रखा, फिर डबल कोट के अंदर gmail.com लिखा. सो यहाँ पे क्या कर देंगे? सीधा ईमेल यूज करेंगे. ओके, और उसको रन करते हैं और पाइथन 3 r.py. ओके, इधर कुछ ईमेल डबल कोट में. ओके, any error we are doing?
प्लस प्लस सिंबल जानता हूँ, भूल गया, सॉरी। यस, देखिए, I got this output, right? That's Sanjay Patil @gmail.com, right? And Sanjay Patil is belongs to Maharashtra. This Sanjay Patil I have used 2 times for the purpose of a variable. I'm telling. This Sanjay Patil I have used 2 times. यहाँ पे संजय, यहाँ पे पाटिल आया, इधर भी संजय, इधर पाटिल आया। तो फायदा क्या हुआ, कल अगर कोई संजय पाटिल की जगह में यहाँ पे रमेश लिखा और यहाँ पे रमेश राउत लिखा, राउत ROUT लिखा, RAUT महाराष्ट्र होता है, ROUT उड़ीसा का होता है। ओके, तो लेट्स से ये लिखा, तो कल ये भी रमेश राउत के लिए भी बना के देगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग वेरिएबल। अगर यहाँ पे आप हार्ड कोडिंग करते थे, इधर लिखते थे संजय, इधर लिखते थे पाटिल, इधर संजय, इधर पाटिल, फिर इधर संजय, इधर पाटिल, तो आपको कितना जगह में चेंज करना पड़ता था गाइस? 6 जगह में, राइट? 1 2 3 4 5 6, राइट और नॉट? Yes, sir. अगर हार्ड कोडिंग करते थे, बट बिकॉज ऑफ आई केप्ट इनसाइड ए वेरिएबल, दिस बिकम्स इजी टू मेंटेन द कोड। कभी भी कुछ चेंज होता था, हम लोग वेरी लेस जगह में चेंज कर। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ ए वेरिएबल। तो वही वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलते हैं, अभी वेरिएबल के डिक्लेयर करते हैं। तो स्पीड होने के लिए हम लोग आईडी यूज करेंगे, तो पाइथन 3 यहाँ पे लिखते हैं कि लेट्स से नेम इक्वल टू सिंगल और डबल कोट में निहार पाइथन। नाउ इस नेम अगर प्रिंट करेंगे, PRINT, प्रिंट नेम, इट इज गोइंग टू डिस्प्ले निहार पाइथन। अगर प्रिंट और आईडी सॉरी टाइप करेंगे, इट विल बी ए क्लास ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अगर नेम करेंगे, इट इज ए स्ट्रिंग क्लास। गेटिंग मी? इट इज स्ट्रिंग क्लास। तो निहार पाइथन इज ए स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग स्ट्रिंग क्लास। तो ये नेम को अगर मैंने ऐसा लिखा, नेम अंडरस्कोर इक्वल टू, इट विल बी अलाउड। देखिए, नेम अंडरस्कोर किया तो मैंने प्रिंट नेम अंडरस्कोर करूंगा तो दिखेगा। गेटिंग मी? मैंने अगर यहाँ पे नेम अंडरस्कोर अभी देखो माई नेम करें, माई अंडरस्कोर नेम, माई अंडरस्कोर नेम, तो ये डिक्लेयर नहीं हुआ इसलिए एरर मारेगा। okay? तो माई नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट? माई नेम, यहाँ पे माई नेम क्या, तो आपको प्रिंट में माई नेम करोगे आ जाएगा। बट सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, माई नेम 1 कर सकते क्या? यस, यू कैन डू दैट। माई नेम 1 करेंगे, माई नेम 1 को डिस्प्ले करो आएगा। कैन आई यूज दैट 1 इन फ्रंट ऑफ द हियर? नो, इन पाइथन इट इज नॉट अलाउड। गेटिंग मी? वेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विथ ए न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नेम, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए स्ट्रिंग नेम। ओके, क्लियर? वेरिएबल नेम। देन Yes, sir. can I use a hyphen here? No, because the extra character is only allowed, that is called underscore. नहीं तो मिक्स ऑफ स्ट्रिंग एंड मिक्स ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, मतलब उसको ये जो इसको बोलते हैं वेरिएबल, बट पाइथन में इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। वेरिएबल इज कमिंग अंडर द आइडेंटिफायर। So what are the different identifiers? One identifier is called variable, another identifier is function, another identifier is class. These are called identifiers. Identifier क्या है? These are names. Okay, these are nothing but names. तो ये जो निहार पाइटल जो वर्ड है, इट इज a string, right? It's a string of data. Let's say 20. अभी देखो मैंने बोलता हूँ कि
एजी और माई एज, माई एज इज ए वेरिएबल। तो यहाँ पे अंडरस्कोर के सिवा और कुछ भी अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर 30 देता हूँ तो माई एज इज 30। तो यहाँ पे अगर तुम स्पेस दिया एरर मारेगा, अगर यहाँ पे हाइफेन दिया एरर मारेगा, यहाँ पे इक्वल कुछ भी दिया, स्टार दिया, कुछ भी दे दो, लेट्स से @ दिया, ये भी एरर मारेगा। तो क्या है, क्या अलाउड है गाइस? ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड एज ए Understood. inside the var. So यहाँ पे और क्या है ना, मिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड मिक्स ऑफ दिस कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को ले सकते हैं। बट नंबर को लो, नो प्रॉब्लम, बट नंबर इज ओनली अलाउड आप सेकेंड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स। तो आप अगर यहाँ पहला कैरेक्टर शुड नॉट बी ए नंबर। तो अभी अगर मैंने ऐसा माई फाइव एज, इट इज अलाउड, नो प्रॉब्लम, but 5 my age is not allowed. Getting me? Yes, sir. So variable name must be start with a character or underscore also. तो मैंने ऐसे लगा underscore name equal to single quote Sila. देखिए underscore is allowed, right? Underscore and alphabet is allowed as a first character of the identifier, whereas numeric data and the number is not allowed as a first character of the identifier. So, and this identifier should not be a keyword. Like हम लोग ऐसा लिख नहीं सकते, int is a class, you know, right? int equal to 20, मैंने ऐसा क्या कर सकता हूँ, ले लिया, इट्स ओके, बट अभी प्रिंट int करूंगा, ये ले लेता है, बट ऐसा आइडेंटिफायर को करते नहीं। ओके, लेट्स से अभी कुछ कीवर्ड से हम लोग यूज करेंगे कि प्रिंट, PRINT, प्रिंट इक्वल टू 30। ओह माय गॉड, ये ले लेता है, बट इट्स नॉट ए रिकमेंडेड थिंग। ओके, तो कीवर्ड यू शुड नॉट, देखो नहीं दे रहा है ना, प्रिंट इक्वल 30 किया, अभी प्रिंट क्या प्रिंट कर रहा है क्या, देखो गाइस, No, एरर sir. आ रहा है ना। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड और इट इज नॉट अलाउड टू राइट, टू मतलब यूज दैट वेरिएबल इन द नेम ऑफ ए आइडेंटिफायर, जो कि सर द कीवर्ड्स, हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स है, पढ़ेंगे आगे जाके। सो देयर आर 32 नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर देयर। ओके, तो लेट्स से अभी एक वन ऑफ द कीवर्ड इज इक्वल ट्रू, TRUE, ट्रू इक्वल टू 90, एरर मार, राइट? गेटिंग मी? तो ऐसा नहीं कर सकते, आगे जाके हम लोग पढ़ें। if equal to 67, these are called the keywords. Okay, so you cannot use the keywords as a identifier. Clear? Any doubt? No, sir. So identifier क्या है ना, alphabets, symbols, alphabet, numeric data and numbers, alphabets and underscores are only allowed, but that number should not be the first character of the identifier, and the identifier name should not be a keyword which is present in the this Python. Next, अभी मुझे आप बताओगे कि थोड़ा एक टेस्ट करता हूँ। ओके, कैन आई राइट लाइक टोटल 1 2 3 इक्वल टू 50, ऐसा, इज इट अलाउड? इज इट अलाउड? No, sir. No, sir. इट No, विल बी अलाउड, sir. इट विल बी अलाउड। क्यों नहीं किया? रेडी में? तो क्यों आप नहीं अलाउड है ना, अंडरस्कोर वाज बिगिनिंग, राइट? तो अंडरस्कोर इज है, इट इज नॉट कमिंग, मैं क्या बोला, अल्फाबेट नहीं तो नंबर्स नहीं तो अंडरस्कोर, ये तीनों को लेके वेरिएबल बन सकता है।
राइट, बट हम लोग का क्या हो गया Yes. ना, बिगिनिंग में ऐसा मैंने ऐसे बिगिनिंग में ऐसा करके ऐसे लिखा है इक्वल टू 30, ये अलाउ नहीं होगा। तो लोग ना छोटा मोटा छोटा ऐसा छोटा गलती करके भी फंस जाते हैं, सर मेरा नहीं हो रहा है, नहीं, एज को बिगिनिंग से एज इक्वल 30 कर दो, ये लेगा। तो मुझे बोलो अंडरस्कोर एबीसीडी इक्वल टू एबीसीडी, ये अलाउ करेगा क्या? बिगिनिंग में स्पेस कुछ नहीं है ना? No, sir. नो, क्यों नो? इट विल अलाउ बिकॉज आई टोल्ड ना, A underscore. अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, पर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। देखो ना, प्रिंट अंडरस्कोर एबीसीडी अंडरस्कोर, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट मॉड्यूल हम लोग एबीसीडी किया था ना, आईएनटी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, बट ये अलाउ किया। ओके, तो आईएनटी it is allowed actually. Let me again do that. Control L underscore A1 equal to 20. Print underscore A1 trace back most line in module int object is not callable. Whereas something is some int concept is there. दिखते हैं उसको string करते हैं, ये क्यों ऐसा किया? It should not be like this actually. अभी एक को करते हैं, no, it has some problem maybe. Okay, but it should allow, okay, because underscore start हो सकता है। देखेंगे कल उसका, देखेंगे क्या है, मैं थोड़ा दिख के बताऊंगा कल को। सो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, हम लोग कल दिखेंगे, ठीक है? कुछ भी डाउट है अभी तक? No, नो sir. सर, No, sir. बट गिग थेरेपी के बारे हाँ, में बताने वाले थे आप। गिट cherry pick, yes, 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 sorry. So let me finish that. It will be actually Okay. control exit करते हैं जरा। Just let me have some message to somebody so that मेरा एक्चुअली क्लास था, उसको थोड़ा लेट, उसका नाम है
Guys, cherry pick, okay? Cherry pick के लिए हम लोग 2-3 सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा अभी. git इधर है, राइट? git minus minus version. Yes, I have git. So I can create one git repository here, or else I can do a git clone. So let me take one of the github.com. अरे क्या ये जा रहा है मेरा. It is very slow. Yes, now it's opened. Git clone, clone. cd. I am in this particular, so git status करेंगे तो इधर आएगा. git log minus minus one line करेंगे तो, oh this is the how many number of things, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इससे मैंने एक ब्रांच बनाता हूँ. git branch करते हैं, branch. currently we have a single branch and let me create one branch out of this. so currently जो branch बनाएंगे ये 10 branch को लेके जाएगा, राइट? तो लेट्स से मेरे पास मैं एक डेव ब्रांच बनाना चाहता हूँ. डेव ब्रांच बनाया. so now I have let me switch to that branch. so git switch switch git switch dev. Now I am at the dev branch. Okay, so ls git branch git branch. So I am at the dev branch. Then let me do some commits here. Okay, I will do some commits like vi f1.txt is not here. f1.txt है. मैंने f2 f3 f4 तीन कमिट करके बनाऊंगा. so vi f2.txt, इसके अंदर मैंने लिखा कि hello 1 और hello 2 और उसको कमिट करते हैं git add dot git commit minus m f2 added. It is one commit. Then same way I am creating another file f3. तो लिखते हैं कि hello 3 same git add dot git commit minus f3 added. It is another commit. Then f3 bi f4.txt suppose, and here hello 4. So I have done another f4 added. So now git log minus minus one line. It is telling you the 3
These three new commits are there, right? Yes or no? Yes, So sir. previously, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ तक commit था, right? Because it was telling this commit, right? अभी recently मैंने इतना commit था, अभी recently ये तीनों commit ऐड किया, right या not? Yes, sir. तो मैं चाहता हूं कि अभी switch कर लाता हूं main को. So git switch, git switch, git switch main. Currently I am at a main. If you will check here, अगर इसका देखेंगे, इसका पास कहाँ तक रहेगा, ये मैक्सिमम D551482 तक रहेगा. देखिए D551482. तो यहाँ पे पहला था 11, ये तीनों आ गया, ये तीनों. बट मुझे इसका जो मैंने मर्ज करना चाहता हूँ, किसको, ये जो इसका मेन पे डेवलपमेंट का ओनली F3 वाला को मर्ज करूंगा. अभी अगर डायरेक्टली मर्ज करूंगा, ये तीनों मर्ज हो जाएगा, राइट और नॉट? अगर मैंने ऐसा लिखा गिट मर्ज अगर डेव लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ना, डेव का तीनों के तीनों आके मेरे साथ मर्ज हो जाएंगे. ये सर नो? Yes. बट मैं चाहता हूं कि ओनली इतना यही 3 वाला मर्ज हो. तो मैंने यहाँ पर लिखा गिट चेरी पिक, मतलब वन ऑफ द चेरी को मैं पिक किया. दीज आर द 3 चेरीज नाउ फॉर मी. चेरी मतलब क्या है कि तुम दुकान जाते, तुम्हारे पास जो चेरी नहीं है, बोले मैंने ये चेरी चाहिए, तो नाउ दीज आर द 3 चेरी. आई एम इन द मेन नाउ. फॉर मी डेवलपमेंट का ये तीनों चेरी है, तो उनसे मैंने एक चेरी को पिक करूंगा बस. ठीक है, देखिए मारो एंटर. हाँ, उसके पहले चेक कर लो, यहाँ पे वो फाइल नहीं होगा. देखो ls-ltr F3 F4 F2 है क्या, नहीं है, राइट? तो मैंने क्या करूंगा अभी, git cherry pick, वही चेरी को चाहिए मुझे. ओके, ये करने में क्या होगा, ये थर्ड वाला देखिए अभी ls-ltr कीजिए, कौन आया, F3 आ गया ना. Yes, sir. अंडरस्टूड? तो मेरे को सब कुछ नहीं आया ना. अभी गिट लॉग -1 लाइन, देखिए ओनली उतना आया. देखिए F3 एडेड. अंडरस्टूड? दिस इज Yes, sir. इट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस. What is git cherry pick? अगर पूछेंगे तो वो कैसे बताएंगे उनको? Git cherry pick is like you, yeah. If you are in a branch and you want to pick pick one of the commits from another branch out of multiple commits. Suppose I have a development branch and I have 3 commits are there, those which are not present in my this main, and I want to pick a particular commit, then that time I can use the cherry pick. Clear? Okay, So sir. definition क्या है, to pick one of the commit out of Commit. multiple commits, that is क्या cherry pick you will use. Okay, sir. Clear? Okay. Bye bye. Bye, ये sir. बहुत छोटा था ना. चलो ठीक है. स्मॉल Okay. टॉपिक है पर इंटरव्यू को पूछते हैं ना उसके रिगार्डिंग. नहीं, ये जरूरी है. इट इज इंटरव्यू क्वेश्चन एक्चुअली, श्योर इंटरव्यू क्वेश्चन. ओके, Yes, sir. Okay, bye, sir. Thank you. गुड नाइट.